हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम ट्राई करेंगे कि किस तरीके से ट्राई डेटा स्ट्रक्चर एक वर्क करता है। ट्राई को हम प्रीफिक्स ट्री भी कहते हैं। तो पहले फ्रेंड्स इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अ ट्राई इज अ ट्री लाइक डेटा स्ट्रक्चर used to efficiently store and search strings. It is used for dictionary implementation, autocomplete systems, spell checkers, prefix matching. Why we use a try? Suppose we want to store cat, car, care, dog. Instead of storing each word separately, instead of storing each word separately, common prefixes are shared. This reduces the repeated storage. स्ट्रक्चर क्या होता है फ्रेंड्स ट्राई नोड का, तो वो देख लेते हैं एक बार। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। क्लास ट्राई नोड, ट्री नोड या ट्राई नोड लेते हैं यहाँ पे। चिल्ड्रन इक्वल टू न्यू ट्राई नोड with the array as 26। सो ये हर कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग एक ट्राई नोड क्रिएट हो जाएगा। फिर ये अपने यहाँ पे देखेंगे हम बूलियन इज एंड ऑफ द वर्ड, तो इसको यूज करेंगे। अब एक बार फ्रेंड्स हम इसको कोड कर लेते हैं। तो उसके लिए हम एक्लिप्स पे मूव करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक हम ट्राई नोड बनाएंगे।
तो ये था फ्रेंड्स हमारा कोड। इस कोड को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले हम ट्राई नोड बनाएंगे क्लास। फिर उसमें क्या करेंगे, एक एरे लेंगे ट्राई नोड टाइप का, जिसमें हर कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग हमें स्टोरेज स्पेस मिल जाएगा। फिर बूलियन इज एंड ऑफ द वर्ड करेंगे कि मार्क करने के लिए कि ये जो वर्ड करेंटली लेटर है, वेदर इट इज द एंड ऑफ द वर्ड और नॉट। इसके बाद ट्राई क्लास बनाएंगे, इसमें ट्राई नोड रूट लेंगे, फिर रूट को इनिशियलाइज करेंगे। फिर उसके बाद इंसर्ट फंक्शन कॉल करेंगे। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले रूट को करंट में स्टोर करेंगे। फिर जो भी हमारा वर्ड वर्ड डॉट वर्ड है उसका डॉट टू कैरेक्टर एरे में उसको बदलेंगे, और उसके बाद एक एक कैरेक्टर वहाँ से उठाएंगे। फिर उसके बाद इंडेक्स में CH-A, इससे इंडेक्स वैल्यू मिल जाएगी हमको। फिर करंट डॉट चिल्ड्रन अगर हमारा नल है, मतलब कि अभी हमारा उसका पाथ बना नहीं है, तो हम एक नया नोड क्रिएट कर देंगे विथ इंडेक्स एज दी करंट चाइल्ड। उसके बाद क्या करेंगे, करंट इक्वल्स टू करंट डॉट चिल्ड्रन, फिर करेंगे करंट डॉट एंड ऑफ द वर्ड। तो ये था फ्रेंड्स हमारा ट्रायल, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। अगले सेशन में हम देखेंगे कि कैसे इसमें सर्च कर सकते हैं।